हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग ऑल। कैसे हैं सब लोग? मेरा नाम अरविंद है और हम हैं हैदराबाद बॉयज, वेयर वी टॉक ऑल थिंग्स क्रिकेट। एक हफ्ते का गैप आ गया है हमारे यहाँ, ट्रैवल एंड वर्क कमिटमेंट्स। बट आज हम आईपीएल वीक 1 के बारे में बात करेंगे और मेरे साथ हैं सौरभ। हेलो एवरीवन, बॉजोर बिकॉज मैं फ्रांस में हूँ अभी। और आदाब बिकॉज लखनऊ सुपर जायंट्स, एलएसजी, आई मीन दे आर एट द टॉप। तो हेलो एवरीवन, या लेट्स गो अहेड। परफेक्ट। चलो हम बात करते हैं आईपीएल 2023। एक हफ्ता हो गया है, 10 मैचेस खेल गए हैं पिछले एक हफ्ते में। हम लोग थोड़ा इतना देख नहीं पाए, बट वी गॉट अप विथ हाइलाइट्स एंड थोड़े मैचेस हमने देखा है, तो हमने सोचा कि पूरे एक हफ्ते का रिव्यू एक साथ कर लेते हैं इस वीडियो में। होपफुली आगे के वीडियोस हम विल बी एबल टू डू इट लिटिल बिट मोर इन या दिस थिंग। लेट मी जस्ट share my screen. I think I'm already there. तो सबसे पहले बात करते हैं थोड़े टीम्स का। फर्स्ट गेम से ही बात करते हैं। थोड़ा हमने लोगों की एक बार स्कोर बोर्ड देख के जस्ट रिव्यू हाउ 10 मैचेस हुए हैं और कौन सी टीम ने कैसे परफॉर्म किया। एक अर्ली फ्लेवर आया है। जैसे कि सौरव ने बताया, लखनऊ सुपर जायंट्स हैव हैड अ फ्लायर और गुजरात टाइटंस ने लास्ट ईयर का परफॉर्मेंस बरकरार रखा है और आगे बढ़ते गए हैं। और डिसअपॉइंटमेंट में सनराइजर्स हैदराबाद, जो हमारे फाइनलिस्ट प्रिडिक्शन में थे, हैवंट येट बिगन देयर कैंपेन। बट लेट अस स्टार्ट हियर। पहले हम चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटंस ने ओपन किया था पिछले फ्राइडे। बहुत ही अच्छा स्टार्ट रहा चेन्नई सुपर किंग्स का। ऋतुराज गायकवाड़ ऑलमोस्ट सेंचुरियन बना लेते, डेब्यू, सॉरी, फर्स्ट गेम ऑफ आईपीएल में सेंचुरी मारना is a kind of a big deal, setting up that marker. And 9 sixes from Ruturaj Gaikwad. He's done exceedingly well there. हमें लगा था कि गुजरात टाइटंस विल कम बैक वेल और शामी का परफॉर्मेंस रहा है, उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग करी हुई है। हम एक्सपेक्टेड था कि राशिद खान इतने रन्स नहीं देंगे और विकेट्स विकेट्स लेंगे, और उन्हें वही करा। 2 for 26 किया उन लोगों ने। और हम बात कर रहे थे, जब हम प्रीव्यू कर रहे थे, कि अल्जारी जोसेफ आ गए हैं इस टीम में लॉकी फर्गुसन के इंस्टेड ऑफ लॉकी फर्गुसन। लगा था कि वो कैसे परफॉर्म करेंगे, बट ही इज ब्लेंडेड इन वेल विद गुजरात टाइटंस। 2 for 33 और 20 ओवर्स में चेन्नई ने 178 for 7 मारा है। रियली नो अदर स्टैंड आउट परफॉर्मर अपार्ट फ्रॉम ऋतुराज गायकवाड़। बेन स्टोक्स कुड नॉट रियली फायर, ओपन ओपन नहीं कर पाए हैं। और या धोनी हैड 14 रन्स, एक ही सिक्स मारा है उन लोगों ने। और ये गेम गुजरात टाइटंस ने बहुत ही कंफर्टेबली से जीत लिया है। शुभमन गिल, who is now the current heartthrob of Indian cricket, the future superstar of Indian cricket, 63 of 36 balls, no, एक बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया उन्होंने। उनके लिए काफी ओपनिंग पार्टनरशिप और दैट ओपनिंग 1-2 प्लेयर साई सुदर्शन हैज प्लेड वेल। लग रहा था कि साई सुदर्शन एक अपकमिंग टैलेंट होंगे इस आईपीएल में, और उन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया, एज असिस्टिंग शुभमन गिल। हमने प्रेडिक्ट किया था कि हंगरेकर बहुत एक वॉच आउट करना चाहिए ऐसे प्लेयर को, और उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया। 3 विकेट लिए हैं, बट रियली टारगेट आराम से उन लोगों ने अचीव कर लिया। 4 balls to spare. Rashid Khan still the man of the match. He came in and he hit a six at the end. But yeah, Gujarat Titans won first by 5 wickets. Saurabh, first match कैसा था? What was your quick reaction on this game? आई मीन आई थिंक चेन्नई put up a good show at least as far as their batting is concerned। तो उनकी बैटिंग काफी अच्छी रही। ऋतुराज गायकवाड़, मैं बस थोड़ा सा सरप्राइज हो गया कि आई वाज जस्ट लुकिंग एट द नंबर ऑफ फोर्स एंड सिक्सेस दैट ही बेसिकली हिट। तो उन्होंने 9 छक्के मारे। ऋतुराज गायकवाड़ ने नेक्स्ट मैच में भी उन्होंने अच्छी बैटिंग की है। तो आई थिंक अभी तक के लिए, आई थिंक आपने दिखाया भी था एक स्लाइड, आई थिंक ही इज राइट नाउ द टॉप स्कोरर एंड द वे ही इज बैटेड। मैंने ये मैचेस के एक्सटेंडेड हाइलाइट्स देखे थे काफी। तो ऋतुराज गायकवाड़ इज लुकिंग गुड। ही इज काइंड शोइंग द ग्लिम्पसेस ऑफ आईपीएल फॉर्म दैट ही शोड कपल ऑफ सीजंस बैक। उनका लास्ट Correct. आईपीएल उतना ठीक नहीं गया था। लेकिन हाँ, आई थिंक ही शोइंग दोज ग्लिम्पसेस एंड आई थिंक चेन्नई के लिए अच्छी बात है कि डेवॉन कॉनवे, who he did not play well in this match, and we're going to get to the second match of CSK.
तो वो भी फॉर्म में है। आई थिंक द ओनली वरिंग पार्ट फॉर चेन्नई सुपर किंग्स एज फार एज द बैटिंग इज कंसर्न, उन्होंने बैटिंग ठीक ही ठाक की है, 178 बनाए उन्होंने। आई थिंक हो सकता है कि लास्ट में फ्यू फिनिशिंग टचेस में थोड़ी सी दे माइट हैव failed to cross that 190 200 mark that they were looking at one point of time. बेन स्टोक्स मुझे थोड़ा सा उनकी, आई नो ही हैज एन इंजरी, तो बॉलिंग अभी नहीं कर पा रहे हैं। आई डोंट नो इफ इट्स हैम्परिंग हिज बैटिंग एज वेल। बेन स्टोक्स का थोड़ा फायर होना उनके लिए जरूरी है, एल्स करेक्ट। I'm not really sure what is, the management of CSK is basically thinking, how Ben Stokes really fits into the team. He fits into the team as far as the as far as the all-rounder role is basically concerned. लेकिन वो बैटिंग में अगर मिसफायर कर रहे हैं और नी अच्छी नहीं है, आई डोंट नो, मैंने उनकी फील्डिंग देखी नहीं है, इज अ वेरी गुड फील्डर, पता नहीं इफ ही इज बीइंग अ लायबिलिटी देयर एज वेल। तो आई थिंक बैटिंग वाइज अच्छी रही थी। आई थिंक बस फाइनल वही एक फाइनल फ्लरिश नहीं आ पाया सीएसके के इनिंग्स में। लेकिन अगर आपने देखा गुजरात टाइटंस ने इस मैच को विदाउट डेविड मिलर बहुत ही आराम से इन्होंने जीत लिया। आई थिंक आई आल्सो लाइक द लुक ऑफ विजय शंकर। आई नो स्ट्राइक रेट डज नॉट स्टैंड आउट, लेकिन मैंने उनकी थोड़ी बैटिंग देखी थी, आई रियली लाइक द लुक ऑफ इट। और बाद में आके राहुल तेवतिया डूइंग हिज तेवतिया थिंग्स व्हिच इज काइंड ऑफ नोन फॉर। और तो ओवरऑल आई थिंक गुजरात टाइटंस एज एक्सपेक्टेड, आई थिंक दे वर टू स्ट्रॉन्ग फॉर सीएसके। उनकी बैटिंग अच्छी है। आई थिंक एक और मुझे बस एक जीटी गुजरात टाइटंस का सिंस 2 मैचेस हो गए हैं और हार्दिक पांड्या की मैं बैटिंग थोड़ी देख रहा हूँ इन द इंटरनेशनल सर्किट एज वेल। नथिंग टू वरी पर से, लेकिन वो पता नहीं ज्यादा ही मुझे थोड़ा कॉशियस होकर खेल रहे हैं जैसा मुझे लग रहा है। तो अगर वो हार्दिक पांड्या 2 साल नेचुरल पहले नहीं वाले गेम बन नहीं जाए। खेल पा रहे अपना, वो नेचुरल गेम नहीं दिखा पा रहे हैं अभी हाँ तक वो तो मुझे एटलीस्ट। थोड़ा, वो आई थिंक वी कैन डिस्कस दिस ड्यूरिंग आवर टीम रिव्यू। मुझे वो लगता है कभी कभी थोड़ा एमएसडी मोड में चले गए हैं, ऑफ एमएसडी और मोड ऑफ 2015 करेक्ट। 2016 और बीइंग वेरी एक्स्ट्रा कॉशियस। तो मुझे लगता है उनको थोड़ा खुल के खेलना चाहिए। साई सुदर्शन, ये 2-3 जो ने चौके लगाए थे मैंने देखा था, और आई थिंक नेक्स्ट मैच में सीएसके अब जीटी he's के done नेक्स्ट very मैच well. में ही इज डन वेरी वेल। तो उनकी बैटिंग बहुत ही अच्छी लग रही है। रिद्धिमान साहा की जगह पे बाद में मैथ्यू वेड को भी ट्राई कर सकते हैं। रिद्धिमान साहा ने इतनी इतनी कोई खराब बैटिंग नहीं की है। साहा, गिल, सुदर्शन विद डेविड मिलर बैक इन द टीम, as we have during our team review pointed out, it's one of the strongest teams. So I think they're on या course as far या as एक चीज मैंने देखी थी, मैं स्कोरबोर्ड देख रहा था, तुषार देशपांडे की इकोनॉमी रेट 15.3 रही है। आई थिंक गेम वहीं पलट गया, उस बॉलर को टारगेट अच्छा करा है इन लोगों ने। हालांकि उन्होंने uh, शुभमन गिल का विकेट लिया था, बट आई थिंक ही स्मैश्ड अक्रॉस द पार्क देयर, बट इन द एंड अ वेरी कंफर्टेबल विक्ट्री फॉर गुजरात टाइटंस इन द फर्स्ट गेम। तो आफ्टर गुजरात टाइटंस फर्स्ट गेम के बाद हमारा नेक्स्ट गेम आया था पंजाब और केकेआर। हमें लग रहा था कि केकेआर थोड़ा वीक होगा, बट सरप्राइजिंगली ये मैच थोड़ा क्लोज रहा है। अगर पंजाब का अगर आप स्कोरबोर्ड देख रहे हैं यहाँ पे, प्रभसिमरन सिंह और शिखर धवन ने स्टार्ट अच्छा दिया है। भानुका राजपक्षा टॉप 3 ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। 11 ओवर्स में 100 रन तक पहुंच गए थे ये लोग। उसके बाद ऑब्वियसली दे गॉट द विकेट्स आउट। फिर सब लोगों ने कंट्रीब्यूशन करा है, ऐसा नहीं contribution है किया कि है। नो वंस गॉन क्रेजी। एट द एंड ऑफ द डे सबका स्ट्राइक रेट अबव 120 रहा है, एंड फाइनली रीच्ड 191 फॉर 5। साउथ ही एक्सपेंसिव रहे हैं, हालांकि उन्होंने विकेट्स लिया है। सरप्राइजिंगली शार्दुल ठाकुर वाज इनएफेक्टिव इन दिस गेम, और यू नो सुनील नारायण भी ऐसा इतना अच्छा, मतलब वाओ परफॉर्मेंस हम्म, ऐसा कुछ दिया नहीं था। तो फाइनली दे एंडेड अप कंसीडिंग टिल 191। और पंजाब एक्चुअली वन दिस बाय डकवर्थ लुईस सिस्टम, डीएलएस मेथड में जीता था। uh, हमें लग ही रहा था कि केकेआर थोड़ा वीक टीम लग रहा था, और इट वाज वेरी एविडेंट व्हेन यू लुक एट द स्कोरबोर्ड। रामनुला गुरबाज ने शुरुआत करी है मनदीप सिंह के साथ, बट उसके बाद यू हैड वेंकटेश अय्यर who was one of the standard performers of KKR before, who came in middle order this time. नीतीश राणा इनके कप्तान हैं अब, now that Shreyas Iyer is out. And then Andre Russell, इनके जो स्टार जो लग रहा था कि यूजुअल सस्पेक्ट्स जो खेलना चाहिए उन्होंने कंट्रीब्यूट किया, but they fell short by 7 runs
in this whole performance. Surprisingly, people wasted balls, some really low scoring rate like Anupul Roy, strike rate of 80. वेंकटेश अय्यर ने भी खुद खास इतना वो नहीं कर पाए. अंडरस्टैंडेबल, वो मिडिल ऑफ द इसमें रहे हैं. बट या एसेंशियली अर्शदीप सिंह, क्या परफॉर्मेंस रहा है. 3 overs 19 runs for 3 wickets. आईपीएल में मतलब ऐसे परफॉर्मेंस देना इन इंडियन पिचेस इज अ वेरी वेरी very good thing, Commendable. and commendable effort. Or not surprisingly, Arshdeep was man of the match. Nathan Ellis ने भी एक विकेट लिया है. सब लोगों ने बॉलिंग करी है. you had like राहुल चहार ने विकेट लिया है. सिकंदर राजा. क्या पंजाब वन दिस क्लोज. अगर डीएलएस नहीं होता, अगर वो बारिश बारिश गिरी थी, 191 would have been still difficult. I would have predicted, Right. KKR would have lost it probably by Right. bigger margin. I think Punjab could have gotten a better net run rate than what they Right. had. But I think Right. very clear winner there. Right. Right. I think पंजाब तो चकदे पट्टे टाइप परफॉर्मेंस रही है उनकी फर्स्ट 2 मैचेस में. वही आई वुड मैं कंप्लीटली सरप्राइजिंग भी नहीं है, लेकिन उनका जो लास्ट मैच रहा है विच विल टॉक अबाउट लेटर, ये फर्स्ट मैच तो मैं बोल सकता हूँ कि एक्सपेक्टेड जो हमारे लास्ट बॉटम के हमने प्रिडिक्शन किया था उन दोनों के बीच में, दोनों तीनों के बीच में ये मैच था. लेकिन प्रभ सिमरन सिंह जो एक प्लेयर है, मैंने मैच की हाइलाइट्स देखी थी, उनका मुझे लुक पसंद आया था, एंड आई थिंक ही काइंड ऑफ प्रूव दैट इन द सेकंड मैच. शिखर धवन, आई थिंक ही इज डूइंग वेल. अर्शदीप सिंह बॉलिंग डिपार्टमेंट में. तो पंजाब किंग्स कुड बी अ डार्क हॉर्स. हालांकि दो में से दो अभी तो टॉप 2 या टॉप 3 में 100% होंगे ही है, लेकिन अभी भी बहुत थोड़े से मुझे, सरप्राइज करा हाँ, है इन लोगों ने. और सरप्राइज करा अभी तो. शिखर धवन लग नहीं रहा था कि has he lost his touch हाँ, and all. I think he's proving everyone that he's still got it. With all he that, still got it. not being in the national circuit in these days, Yeah, लग रहा था कि शायद फिटनेस में इनका कुछ इशू होगा. How would we do it? But I was impressed, yeah. the way he has conducted Shikhar, himself over. yeah. I think Dhawan Rajapaksa, I think he is fit enough to play the next match. I think उनको कुछ इंजरी हुई थी. Correct. I think next match, I think जो दूसरा मैच हुआ था पंजाब किंग्स का, when I think शिखर धवन ने शायद कि ने कुछ शॉट मारा था और आई थिंक राजपक्षा को लग गई थी. तो आई थिंक सो मैंने एक पोस्ट देखा था इंस्टाग्राम में. आई थिंक ही इज डूइंग क्वाइट ओके, सो ही शुड बी फिट इनफ टू प्ले द नेक्स्ट मैच. तो आई थिंक पंजाब किंग्स की पे नजरें रहेंगी मेरी, आई थिंक अब, क्योंकि उन्होंने थोड़ा सा ओवर परफॉर्म कर दिया मेरे हिसाब से. Good एटलीस्ट द start. सेकेंड मैच, एटलीस्ट द नेक्स्ट मैच जो हम बात करेंगे राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ, आई थिंक उनकी विक्ट्री हुई थी, विच वाज लिटिल सरप्राइजिंग टू मी. तो नजरें रहेंगी मेरी. Yeah. पंजाब ने कभी आईपीएल जीता नहीं है, तो देखते हैं क्या होता है. लेट्स सी. Yeah. Yeah. Let's talk the third game. Lucknow Super Giants and Delhi Capitals. लग रहा था कि ये एक powerful game होगा. Two heavyweights. I felt. We all knew कि Kyle Myers क्या performance देंगे, and he just did it. 73, 7 sixes in that. I mean, he just blasted out Delhi out of the park there. 193 for 6. Nicholas Puran लग रहा था कि शायद कर नहीं पाएंगे, but that whole the West Indies duo ने बहुत ही अच्छा performance दिया है. Everyone chipped in like 10-20 runs, but really it was Kyle Myers there. Chetan Sakaria got hammered. 4 overs 53 runs. He just picked up 2 wickets there, but Rahul was a flop. He just went out cheaply, and I think Rahul wasted a lot of balls too. दिख रहा था वो. मैंने देखा था इनिशियली वो जब ये चल रहा था, बट राहुल वाजंट सेटल नहीं हुए थे. आई थिंक स्टिल ट्राइंग टू गेट इनटू दैट ग्रिप देयर. बट yeah, 193 for 6. ऐसा लगा था कि ये थोड़ा इंटरेस्टिंग गेम होगा. Prithvi Shaw and David Warner had a great start. I mean, 4 over में there were 40 runs, and in comes Mark Wood, and he destroys Delhi Capitals in just 1 over. Warner out किया, and the next ball Mitchell Marsh, and then finally he had Sarfaraz Khan a couple of balls later. मतलब couple of an over later, game खत्म हो गया वहाँ पे. मतलब Mark Wood आए, he came, he saw, he conquered वाला हिसाब रहा.
Delhi crashed after that. Riley Russo ने थोड़ा contribute किया 30 runs, but that's it. They crashed to 143 for 9. Mark Wood 5 for 14. I think this is the best performance by an Englishman in IPL. He just destroyed Delhi Delhi in just that one over. But yeah, LSG started with a bang, 50 run, very good victory there. Against what we thought would be one of the top 4 teams. Delhi, powerful team lag rahi thi, balanced team lag rahi thi, but Mark Wood, as you said, I think preview में आपने बोला था कि Mark Wood को बहुत देखना चाहिए, and he just bursted out right there. हाँ, मैंने मार्कवुड की बॉलिंग को काफी क्लोजली फॉलो किया है लास्ट 1-2 साल से, और मैंने उनकी बॉलिंग देखी थी पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान के डेड वनडे विकेट्स में और टेस्ट विकेट्स में उन्होंने काफी लाइवली बॉलिंग की थी। तो और अच्छे बॉल बैट्समैन के साथ, आई थिंक आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक्स ऑफ बाबर आजम वगैरह। तो मेरी नजरें थी इनके ऊपर, और मैंने अगेन इस मैच की एक्सटेंडेड हाइलाइट्स देखे थे। आई थिंक सरफराज खान मैं देख रहा था, आई नो कि लोग उनको बोल रहे हैं टेस्ट मैचेस में आने के लिए, लेकिन द वे ही गॉट आउट वाज लिटिल डिसहार्टनिंग, क्योंकि वो टेस्ट मैच लेंथ की बॉल थी, और आई डोंट थिंक सो ही काइंड ऑफ डेल्ट वेल, आई एम टॉकिंग अबाउट सरफराज खान एंड द वे ही गॉट आउट। तो मार्क वुड, आई थिंक ये एंटायर मैच अगर आप बोलें, हालांकि काइल मायर्स अगेन हमने उनके बारे में थोड़ा टच अप ऑन किया था, मैंने बताया था कि ही वाज प्लेइंग वेल इन द साउथ अफ्रीका सीरीज इन साउथ अफ्रीका। तो उन्होंने अच्छी बैटिंग की है। आई थिंक केएल राहुल थोड़ा सा अगर और डिसेंट फॉर्म में आ जाए, आई एम नॉट सेइंग कि 150 160 स्ट्राइक रेट, अगर 130 125 टू 140 के बीच में अगर स्ट्राइक रेट दें और काइल मार्क्स का साथ दें, आई थिंक एलएसजी, हालांकि हमने बोला ही था कि वो टॉप 2 पे तो नहीं थी हमारी, लेकिन ये थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, दे आर क्लोजली, एज फार एज द कम्पिटिटिवनेस इज कंसर्न, दे आर वेरी क्लोज। तो अगर राहुल थोड़ा सा अच्छे फॉर्म में आ जाए, दिस टीम इज क्वाइट गुड। आई नो एलएसजी आई थिंक एक मैच हार चुकी है, लेकिन इनकी टीम मुझे स्ट्रांग लग रही है, बैटिंग भी अच्छी है। स्टॉइनिस थोड़ा सा अगर और कंट्रीब्यूट कर दे, निकोलस पूरन, जो कि आई थिंक लास्ट आई थिंक एसआरएच के लिए खेलते थे, उन्होंने वहां पे उतना कुछ अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया था, Correct. लेकिन यहाँ पे एक दो मैचेस में जो भी खेले हैं, आई थिंक he's डन वेल। तो या आई थिंक एज ही सेड, आई थिंक मार्क वुड ने अभी टॉप विकेट टेकर भी रहे हैं Yes. अभी तक जितने, तो And he was supported very well by Avesh Khan and Ravi Bishnoi. ऐसा नहीं था कि he didn't had company there. So this was a very surprising start I felt from LSG. मुझे लगा था DC was a great start. मुझे लग रहा था कि David Warner was doing what he does well. But yeah, I don't think they had answers after the moment he got out Prithvi Shaw and Mitchell Marsh. That game was just taken out there. So yeah, very comfortable win for LSG there. Our next match was what we were predicting the finals actually. जब हमने preview किया था SRH versus RR, and RR did not disappoint the way they started. No, yeah, मैं लग रहा था कि यशस्वी जायसवाल, Sanju Samson, and Josh Butler would hit the ground running, and all of them scored that 54-55. No, Josh Butler was at a strike rate of 245. They've done really really well. मतलब ऐसा नहीं था कि संजू सैमसन ने भी चार 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 छक्के उन्होंने ठोक दिए थे. It just was unbelievable the way they have batted out the opening. ऐसा लग रहा था कि they could go more than 200. I think थोड़े वो विकेट्स चले गए, and then Devdutt Padikkal got out and Riyan Parag got out. थोड़ा वो बैकअप आया, but Shimron Hetmeyer finally did what he had to do. Yeah, 203 for 5. Bhuvneshwar Kumar captain race game mein because South African team wasn't arrived, so Aiden Markram or Heinrich Klaassen, these guys weren't part of the squad yet. So we had Fazalak Faruqi who played in, Natarajan was there. He bowled well, Natarajan. I saw that his bowling. He really bowled well. Support नहीं मिला उनको. मुझे लगा था कि इमरान मलिक, Adil Rashid was ineffective actually the game. But yeah, when लगा था कि 203 was a good score and there would be a good game. But SRH collapsed. SRH continued what they did last year. The batting में balance ही नहीं रहा. They got blown away by Bolt. Trent Bolt came and he conquered. 4 overs, 1 maiden, 21 runs for 1 wicket. Took out Abhishek Sharma, took out Rahul Tripathi.
in I think in the space of 2 balls. And then that was it. Harry Brook, I think he's still getting grips to the IPL. Glenn Phillips could not perform. Baki uske baad Abdul Samad. Uh, एक second. Yeah. Then Adil Rashid. It just collapsed. They were Tough. 48 for 5, and that was it. So That was it. it was, I think, at point ki, how quickly they'll fold. And बाद में I think Abdul Samad Adil they tried to give it respectability, थोड़ा 100 के ऊपर लाया score, and then they finally collapsed it. But pretty shocker of a start for SRH there. Yeah, it was quite a one-sided. I think 200 के ऊपर anyways it kind of becomes little difficult, लेकिन थोड़ा at least competitive game मैं expect कर रहा था. एक very Correct. surprising. I mean, I think RR did what they did as far as the batting is concerned. आप जॉस बटलर अगर आप 20 बॉल पे 50 रन मार देते हैं तो राजस्थान रॉयल्स is pretty safe as far as the number of runs that they can actually put on board. शायद वो मिडिल ऑर्डर्स में देखना चाहेंगे थोड़ा और फ्लरिश कहीं से आ जाए. रियान पराग डोमेस्टिक में थोड़ा अच्छा कर चुके हैं, तो वहां पे उन पे मैं रियान पराग की परफॉर्मेंस में देखना चाहूंगा बाद में. लेकिन एसआरएच का जॉस बटलर, आई थिंक आई एम प्रीटी क्यूरियस अबाउट इट. एक पॉइंट है कि वो आउट हुए हैं, दैट्स वन. दोनों मैचेस में आई थिंक वी आर गोइंग टू कम टू द सेकंड मैच, लेकिन दोनों मैच में वो लेग स्पिनर पे आउट हुए हैं. And the way he has got out, it's not that he was playing a shot or he got out to a to a bad ball and he was trying to hit a shot and he got out. वैसा कुछ नहीं हुआ. He genuinely got out to very good balls. So, and the way he got out was quite similar in nature. और दोनों लेग स्पिनर, जैसे मैंने बताया कि दोनों लेग स्पिनर पे आउट हुए हैं, तो मेरी नजर इन पे रहेगी अब कि वो कैसा परफॉर्म करेंगे. आई नो जितना पैसा दिया गया है हर एक ग्रुप पे, उन पे प्रेशर बहुत रहेगा. और Absolutely. नेक्स्ट नेक्स्ट फ्यू मैचेस में देखते हैं वो कैसा परफॉर्म Yeah. करते हैं. लेकिन हाँ, एसआरएच हालांकि वी सेड कि वो टॉप 2 टीम्स पे रहेंगी, तो आई थिंक राइट नाउ दे हैव लॉस्ट बोथ द मैचेस. लेट्स बट स्टिल लिटिल अर्ली. Yeah, it's too early, लेकिन but not the start they would have wanted. The momentum नहीं रहा. एंड इस गेम में अगर देखा जाए, बॉल्ट ने जो परफॉर्मेंस दिया फर्स्ट ओवर में, गेम ऐसा लग गया कि they kind of gave up, खत्म. and then Chahal just took out other 4 wickets. 4 for 17. But yeah, man of the match Josh Butler rahe for his swashbuckling 54 of 22 balls. But that was it for SRH there. First round में last game रहा मुंबई इंडियंस और आरसीबी, the powerhouse Kohli versus Rohit Sharma. Surprisingly, Rohit Sharma got out. He wasted 10 balls. It was a very horrible batting from him, I would think. Cameron Green भी flop रहे हैं, but the star हमें लग रहा था कि we always knew कि तिलक वर्मा would do well, and he did that exactly. 84 of 46 balls, strike rate of 182. What an amazing performance. कहाँ से कहाँ ले गए थे. At one point they were 48 for 4 and they ended up going at 171 for 7. ऐसा लगा था कि this was a very respectable total there. सब लोगों ने विकेट्स लिया वहां पे. आकाशदीप, रीश टोपली, हर्षल पटेल, कर्ण शर्मा. बट एसेंशियली लगा था कि ये was not gonna be enough, and exactly वही हुआ. फैफ डुप्लेसी एंड विराट कोहली ने गेम सफाई कर दी वहां पे. They finished the game in 16 overs. 172 for 2, strike rate of 10, run rate of 10 and a half. Between them 11 sixes. ग्लेन मैक्सवेल ने आके 2 छक्के मार के गेम खत्म कर दिया. Really, there was a little bit of a surprise there कि जोफ्रा आर्चर आए but विकेट्स नहीं दे पाए. उनका मैंने बॉलिंग देखा था. He was not impactful there enough yet. Um, yeah, Cameron Green was expensive in that 2 overs he bowled. But लग रहा था कि ये दोनों ही weak teams थी, but we always said कि अगर विराट और फैफ they start well, the RCB will do well, and exactly वही हुआ. Virat has done really good start there. Very simple victory there for RCB. A very comprehensive victory for RCB actually बोला जाए तो. very 8 wicket victory. very comprehensive. Yeah. Very comprehensive. मतलब अगर अगर लोगों को याद हो, जो हमने प्रीव्यू में बात की थी मुंबई इंडियंस की बैटिंग और आरसीबी की बैटिंग. मुंबई इंडियंस की बैटिंग हालांकि एक ही मैच हुआ है. रोहित शर्मा, ईशान किशन, कैम ग्रीन के बारे में मैंने
बात की थी, हालांकि टेस्ट मैचेस में उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया था, और सूर्य कुमार यादव, दे आर नॉट कमिंग विद रेड हॉट फॉर्म फ्रॉम द ओडीआई मैचेस. Correct. Surya Kumar Yadav, I think, in Had very a horrible triple infamous zero. 000 first ball, Yep, शायद triple फर्स्ट zero. बॉल, Golden राइट? Ducks. हाँ. All of them golden. और अगर आप देखें तो टॉप 4 और 5 ने परफॉर्म नहीं किया है, और यही बात केकेआर की बैटिंग में भी, हालांकि उन्होंने 200 रन बनाए थे, उनकी भी बैटिंग में ये रिफ्लेक्ट हो रहा है. तो टॉप ऑर्डर बिल्कुल ही मिसफायर किया है मुंबई इंडियंस का फर्स्ट मैच में, हालांकि एक ही मैच हुआ है एक ही उनका. मैच हुआ है अभी. It's too early to say. Yep. तो टू अर्ली टू से, लेकिन 117 वाज अ वेरी डिसेंट सॉर्ट ऑफ अ टोटल, और कंसीडरिंग वेयर दे वर एट वन पॉइंट ऑफ टाइम. लेकिन हाँ, आरसीबी, आई मीन, अगर किंग कोहली और फाफ अगर ऐसी बैटिंग करेंगे तो इट्स नॉट ओनली मुंबई इंडियंस हु आर गोइंग टू स्ट्रगल, एनी टीम कैन Any स्ट्रगल. team तो would struggle. किंग कोहली, हमने बताया था कि ही इज लुक्स लाइक इट, बाय द लुक्स ऑफ इट, आई थिंक अब तो 6-7 महीने हो चुके हैं, तो आप कंफर्टेबली बोल सकते हैं ही इज बैक टू, if not his best, close to his best. Yeah, she's hit the तो form in right time for them. और सेकंड मैच में भी he was looking well. I know आरसीबी lost, he was kind of looking well. Correct. सुनील नरेन ने उनको बोल्ड कर दिया. तो आई थिंक आरसीबी के लिए सबसे बड़ी न्यूज ये है कि किंग कोहली इज कंटिन्यूइंग हिज फॉर्म. तो देखते हैं आगे जाके क्या होता है, लेकिन आरसीबी की बॉलिंग मुझे थोड़ी बहुत इफी इफी लग रही है. दैट्स बीन देयर हाँ, प्रॉब्लम. that's been their problem. Although मुंबई इंडियंस का खराब स्टार्ट रहा है, which रीस टोपली एंड सिराज ने बहुत अच्छी बॉलिंग करी है इस बार. ऐसा नहीं है कि they were able to हम्म. take the wickets out quickly, but the concern lie. एक ही मैच हुआ है उनका, तो we'll see how MI will continue there. But yeah, so राउंड वन के बाद जब सब लोगों ने एक एक मैच खेल लिया, that's when I say राउंड वन, मेरा ये कहना है कि सब लोगों ने एक मैच खेल लिया है. IPL doesn't use these round one, round two, so I don't Yeah, want right. people to get confused. Essentially, सब लोगों ने एक मैच खेलने के बाद ऐसा राजस्थान रॉयल्स were at the top there. Lucknow and Bangalore and Titans, they all got points there. And if you look at the bottom table, you had Sunrisers with a very bad net run rate of -3.6 here, and then Delhi Capitals at -2.5. बहुत ही गुड स्टार्ट रहा है in terms of सरप्राइज तो कुछ लगा नहीं था. We were look at it, RR हमें लगा था will be in the top 4. Gujarat Titans would be there in that space. Lucknow Giants would be in that mid table. They kind of overperformed. Delhi and Sunrisers losing, obviously it's very early, one game ही हुआ है, but the way they lost it, I think that would be on their minds. And अगर हम आगे आगे हम बात करेंगे the next matches की, उसमें आपको दिखेगा कि how these guys are fared and how Lucknow has just pulled away from the rest of the group. Chennai versus LSG रहा after the round one, which is essentially first round set of matches. लग रहा था कि इस बार चेन्नई कुछ अच्छा परफॉर्मेंस करेगा, क्योंकि ये फर्स्ट गेम था चेपॉक में. And they have done well. As you said, Ruturaj Gaikwad continued his prolific form of game one. 57 runs मारा उन्होंने. आपने जो बोला था, डेवन कॉनवे ने भी 47 of 29 balls में मारा है. And finally we had Dhoni come in, 12 runs of 3 balls. He hit that 2 sixes. I saw that. That was amazing यार. Ben Stokes again did not perform, तो वो लग रहा था कि उनको pressure आने वाला है अब. He also wasted a lot of balls there. Mark Wood again. He was the one who took out the wicket of Devon Conway, and then he came down and took out wickets of Ravindra Jadeja and Dhoni at the end of the day. And then Ravi Bishnoi also done very, very well in the middle part of the game. But 217 lag raha tha ki, would be very difficult, and it proved to be. Although मैं ये match देख रहा था, actually at one point of time, they were 81 for 1. And लग रहा था कि they had a great start here. Actually, They were yes. 78 for no loss. I forgot. बहुत अच्छा start रहा. Rahul actually started well, but Kyle Mayers again. And I think वो time out बोल सकते हैं, या first 5 overs होने के बाद he just gave the ball to Moeen Ali. And I think I felt here Dhoni's experience was shown. लग रहा था कि pressure में आ रहे हैं चेन्नई, and then Moeen Ali came, and within few balls he took out Rahul, he took out Myers, and then wickets started to fall again. He came back again next couple of hours later, and then उस तरफ से सैंटनर ने शुरू कर दिया अपना other end, and Deepak Hooda and then Krunal Pandya, and then
it looked like the game was away, and then it was evident after a point of time. But at the end, again, Nicholas Puran and Ayush Badoni, Krishnappa Gautam tried getting very, very close there. And again, Moeen Ali came back and made sure he took two more wickets there. He tried to chip in. So essentially, and I know at the end Tushar Deshpande वापस आया उन्होंने 2 विकेट लिया, but very close game. And I felt the difference between LSG losing and Chennai winning was Dhoni. He 12 रन उन्होंने जो runs मारे, that's essentially the cap, and the way he changed his fielding and the captaincy and the whole impact there. The way he's managed it is amazing. Ayush Badoni came on that side, and यहाँ पे तुषार देशपांडे आए थे, and then he came down and took out that wicket of Badoni at the end, and Nicholas Puran, which kind of changed the game there. But amazing performance from CSK there. या आई थिंक 12 रन से जीते एट द एंड। आप बोल सकते हैं कि वो जो 12 रन धोनी ने बनाए 3 बॉल पे also proved to be That was those the match difference winning run। between the two. Yeah, match winning runs there. या या तो मोइन अली के लिए काफी मैच अच्छा मैच रहा। आई थिंक इंग्लैंड के जो सुपरस्टार्स आए हैं T20 के या फिर ओवरऑल जो शॉर्टर फॉर्मेट ऑफ द गेम है, आई थिंक Correct. मोइन अली और मार्क वुड ही अभी तक थोड़ा बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाए हैं। नहीं तो और थोड़े तो 3-4 जो हैं आईपीएल में अभी, वी आर काइंड ऑफ वेटिंग फॉर देम टू परफॉर्म। तो मोइन अली के लिए एटलीस्ट एज द बॉलिंग इज कंसर्न्ड वाज अ वेरी वेरी गुड मैच। ऋतुराज गायकवाड़ काफी चर्चा में है अब। वो इंडियन मीडिया में, आप जैसे जानते हैं इंडियन मीडिया में एक दो मैचेस ही लगते हैं कि यू नो Correct. अब उनको इंटरनेशनल मैचेस में खिलाने की बातें स्टार्ट हो जाती हैं। आई थिंक ऋतुराज गायकवाड़ की पहले भी बातें स्टार्ट हुई, मतलब बातें हुई हैं, लेकिन हाँ, आई थिंक इज काइंड ऑफ मेकिंग अ स्ट्रॉन्ग केस फॉर Yes, हिमसेल्फ। yes, absolutely. He's done really well there. हाँ, तो बस मैं, आई मीन, बिफोर वी मूव टू द नेक्स्ट मैच, आई थिंक एक ही पॉइंट है एलएसजी की बैटिंग का। अगर आप बस देखें कि 80 फॉर नो लॉस या 78 फॉर नो लॉस, 6 ओवर ही हुए हैं, आई थिंक अ वेरी गुड स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। अगर बस आप देखें केएल राहुल की बैटिंग को, आई थिंक ही डिड ओके। आई मीन, ही माइट बी सपोर्टिंग, आई डिड नॉट वॉच दिस मैच क्लोजली। मैंने काइल मेयर्स की थोड़ी बैटिंग देखी थी, वो भी हाईलाइट ऐसे रील्स आते हैं इंस्टाग्राम में, मैंने उनकी बैटिंग देखी थी वहां पे। he might be doing a support, doing a support sort of a job in that partnership। लेकिन अगर वो 18 बॉल पे अगर 30 रन मार दें या फिर 25-30 रन मार दें इंस्टेड ऑफ जस्ट 20, उनका स्ट्राइक रेट आई थिंक इज जस्ट ओवर 100। मैं जो बात कर रहा था वो 125 से 140 की, अगर वो रन होते, यू आर टॉकिंग ऑफ 10 to 12 रन मोर, आई थिंक वो प्रेशर अगर थोड़ा सा एलिविएट कर दें काइल मेयर्स का और पूरी एलएसजी की बैटिंग का, क्योंकि थोड़ा सा एक जो स्ट्राइक रेट मैं देख रहा हूँ केएल राहुल की बैटिंग में सिंस द टाइम ही ज्वाइंड पंजाब किंग्स, ही स्कोर अ लॉट ऑफ रन्स, लेकिन उनका स्ट्राइक रेट मुझे थोड़ा सा Or एक the slow. कंसर्निंग, स्लो स्लो, एक बाबर आजम सॉर्ट ऑफ फीलिंग मुझे आ जाती है केएल राहुल। हालांकि मुझे लगता है कि उनके पास बाबर आजम से ज्यादा शॉट्स हैं। आई नो some of the Babar Azam fans may not really like it, लेकिन उनके पास उनसे ज्यादा शॉट है। I'll आप ही stick my कहाँ neck out बाबर and आजम को केएल राहुल से कंपेयर कर रहे हो? बाबर आजम head and shoulders is I above know, केएल राहुल. नहीं मैं Sorry, केप Indian मैं fans. अच्छा, फॉर इंडियन फैंस, राइट राइट। और मैं केपेबिलिटी वाइज मैं बोलना चाहूंगा केएल राहुल पॉसिबली इज फार मोर क्या बोलते हैं, जैसे रोहित शर्मा और विराट कोहली का कंपैरिजन होता था। रोहित शर्मा इज फार मोर टैलेंटेड देन विराट कोहली। मुझे भी लगता है Correct. कि केएल राहुल इज वेरी टैलेंटेड, लेकिन बस थोड़ा सा अगर स्ट्राइक रेट पे थोड़ा फोकस कर ले, थोड़ा सा केयर फ्री मुझे होके खेले मुझे ये गेम में तो। मैंने ये गेम देखा था एक्चुअली. The way they have wilted out. Um, Nicholas Puran should have come at number 3. दीपक हुडा आके he wasted balls, pressure आ गया वापस, because आप जब 220 चेस कर रहे हो ना, 218, there is pressure on you every second third ball. अगर आपने बॉल को if you have not taken out the ball out, हम्म, I felt कि यहाँ पे पूरन को आना चाहिए था नंबर 3 स्पॉट पे. um, I हम्म, think this was a game for LSG to win. I felt the difference was Dhoni there, the kind of captaincy, the kind of bowling changes he was trying to do. The way he used Santner and Moeen Ali was just amazing there. I know Ben Stokes actually उन्होंने एक bowling over करी थी, उनको धो दिया था actually. But yeah, I CSK I won think this nicely.
आई थिंक धोनी, आप उनके बारे में बात कर रहे हैं तो धोनी इस मैच के बाद, आई डोंट नो इफ यू read his read the comments or what he basically stated, spoke to media after the match was over. He was not really happy with the bowlers. कैसा कुछ करेक्ट, हिंट गया है मीडिया को, या फिर आई डोंट नो, ही सेड करेक्ट। दैट कि आई मीन ही एंड एंड वुडंट। एंड सो जब मैं स्ट्रेटेजिक टाइम आउट देख रहा था, द वे ही वाज टॉकिंग टू द प्लेयर्स, पीछे अच्छा। स्टीफन फ्लेमिंग थे, they were all listening to him. He was very animated. He was like, and especially वो ओ, 5 overs के बाद वो जो break आता है, you could see, and then the first strategic timeout, he was ओ, आई मिस into the दैट। game. He was laying it out जहां पे उनको रहना चाहिए था। मैं बोल रहा हूँ, the credit of this win is goes to Dhoni, the way he managed it. हम्म। Because उनको लगा था यार 220 मार के भी इतना क्लोज गेम हो गया, considering the fact हम्म। that आपने 4 wickets ले लिए, they were what, 105 or 4. You still allowed 100 runs, so yes, bowling had to be given joint there, but yeah, because Chennai winning game at Chepauk, first game tha, it gives them a momentum ki, how they want to play forward there, and how the bowling needs to integrate well, वो दोनों games में it did not go out per the plan for them. आई थिंक सीएसके को, जैसे आई थिंक टीम रिव्यू में बात की थी, उनकी जो फास्ट बॉलिंग का जो सेटअप है, वो ही एक थोड़ा सा मुझे, लग रहा था कि वही होना था, एंड और वही लग रहा है। आप देखेंगे दीपक चाहर कमिंग बैक फ्रॉम इंजरी, बेन स्टोक्स he नॉट was फिट इनफ टू smashed. बॉल। केएल तो मेयर्स ने उनको उड़ा दिया था, मतलब बॉल वाज, the way he was hitting them was just amazing. हम्म, हम्म, या Yeah, so yeah, let's go to the next game. Delhi versus Gujarat. और यहाँ पे हमारे शामी एंड राशिद खान continued the form. 162 for 8. Nothing really to speak about from Delhi. कुछ अच्छा परफॉर्मेंस दिया नहीं है दिल्ली ने एक्चुअली। दे वर 100 for 5 एक्चुअली। ये भी मैंने गेम थोड़ा बहुत देखा था बीच में। I was very disappointed with Mitchell Marsh, the way he's came out. सरफराज खान ने भी, मतलब ही वाज वेस्टिंग बॉल्स, मतलब रोटेट नहीं कर पा रहे थे, मतलब क्या वो, ही वाज नॉट प्लेइंग दैट T20 गेम, एंड देन उसके बाद एक बार रायली रूसो आउट हो गए, लग रहा था कि ये जाएगा। इट वाज ड्यू टू अक्षर पटेल एंड अभिषेक पुरेल। एक्चुअली ये गेम थोड़ा यू नो रीजनेबली रेस्पेक्टेबल 140 टोटल। हाँ तक चला गया था। अक्षर पटेल ने 3 छक्के मारे, टेकन इट क्रॉस 150 देयर, इन ही हैड आंड्रिक नॉर्किया ने एक बाउंड्री मारी एंड ऑल, बट लग रहा था कि इट्स नॉट गोना बी कॉम्पिटिटिव स्कोर, एंड एग्जैक्टली वही हुआ। Sai Sudarshan आए, now Anik Nokia was back, so South African teams are back in the squad. They're getting grips of the Indian conditions, but Anik Nokia has done really well there in that first over, in his second over and third over sort of a scenario. Um, but Sai Sudarshan, beautiful performance from him. He's played a very sensible game. मैंने highlights देखी थी, and he was very very well supported by Vijay Shankar there, and then finally David Miller coming and doing what David Miller has always done. And 18 ओवर में they wrapped up the game. It was a very comfortable victory. ऐसा भी कुछ प्रेशर में नहीं आए थे after a point of time, and just not was not enough a good, इतना बड़ा स्कोर नहीं रहा, सो प्रेशर मुझे लगा नहीं कि कभी था इन पे। Yeah, disappointing performance actually from Delhi, especially batting. आई थिंक डेविड वार्नर, मैंने फर्स्ट मैच में जो हमारा रिव्यू रिव्यू रहा था राउंड वन में, इनके बारे में बात नहीं की, लेकिन इनका स्ट्राइक रेट एसआरएच में भी, जब वो उनका आई थिंक जो करेक्ट। लास्ट था, वो लास्ट स्ट्राइक सीजन में रेट, स्ट्राइक रेट बहुत ही एवरेज रहा है फॉर हाँ, आईपीएल एंड फॉर हिज स्टैंडर्ड्स। his standards, I think. I don't know if age is a factor, या फिर हैंड आई कोऑर्डिनेशन एज के साथ जो कम हो जाता है, इज दैट द इशू। इंटरनेशनल मैचेस में भी इनकी बैटिंग थोड़ी सी, इट हैज काइंड ऑफ डिक्लाइंड अ बिट। लेकिन हाँ, आई थिंक आईपीएल में लोग बोलेंगे कि विराट कोहली एंड रोहित शर्मा तो नहीं बोलेंगे, सुरेश रैना एंड धोनीज ऑफ द वर्ल्ड को लोग सोचते हैं कि दे आर द टॉप बैट्समैन। लेकिन अगर आप मेरे से पूछेंगे तो आईपीएल हेड एंड शोल्डर्स अबव सबसे हैं डेविड वार्नर, नॉट ओनली फॉरेन प्लेयर्स के मामले में, ओवरऑल बैटिंग, करेक्ट। इंडियन एंड इंटरनेशनल। आई थिंक उनका
रिकॉर्ड काफी अच्छा रहा है। आई थिंक दैट वाज रीजन दिल्ली took him back. तो डेविड वार्नर को पे आई थिंक कैप्टनसी कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली एक चॉइस बन जाते हैं। लेकिन एक दिल्ली मैनेजमेंट को थोड़ा देखना होगा। रिकी पॉन्टिंग है वहाँ पे, सौरव गांगुली है वहाँ पे, उनको देखना होगा कि आगे जाके क्या करते हैं अगर डेविड वार्नर का यही परफॉर्मेंस रहा। मिशेल मार्श आपने टच किया, 2 मैच हुए हैं अगेन, काफी आई थिंक पैसे इन पे बरसाए गए थे दिल्ली की तरफ से, उन पे भी नजर आएंगे। आई थिंक अब गुजरात के पास सर आने वाले हैं, एक तो है सर रविंद्र जडेजा और दूसरे हैं सर अक्षर पटेल। अक्षर पटेल ने तो लास्ट ईयर, सब जानते हैं कि इंटरनेशनल एटलीस्ट जो लास्ट सीरीज हुई थी ऑस्ट्रेलिया में, उनकी बैटिंग कितनी निखर के सबके सामने आई थी। और यहाँ पे भी दिखा रहे हैं कि उनकी बैटिंग कितनी इफेक्टिव है। Yeah. तो या आई थिंक गुजरात टाइटंस के लिए 160 कभी भी मुश्किल टारगेट नहीं है, विद डेविड मिलर कमिंग बैक टू द टीम। तो काफी इजी सा मैच रहा मेरे हिसाब से जीटी के लिए। मुझे नहीं लगता है कि दे हार्डली ब्रोक स्वेट टू विन दिस पर्टिकुलर मैच। When I was looking at it, Akshay Patel did not bowl. इज इट? Yeah, अच्छा। it was very interesting. अच्छा, एक और चीज है। आई मीन हार्दिक पांड्या इज कैप्टनिंग दिस एलएसजी, नो सॉरी एलएसजी नहीं, Gujarat. गुजरात टाइटन साइड। नाउ इज, आई मीन इट्स रिटन ऑन द वॉल दैट ही इज गोना बी द व्हाइट बॉल कैप्टन। हाँ, I think मुझे लगता है, he's grooming himself to be the next successor to Rohit Sharma in terms of हाँ captaincy वो for तो the next. देखिए, वो तो है कि मैं जैसे मैंने बोला, इज रिटन ऑन द वॉल, ही इज गोना बी द कैप्टन। आई थिंक मुझे लगता है कि इस टीम से जो भी इंडियन कंटिजेंट के प्लेयर्स जो भी अच्छा परफॉर्म करेंगे, आई थिंक वो अच्छे बुक्स में रहना चाहेंगे हार्दिक पांड्या के, in And all aspects as far yeah, and I as think perform. अब देख रहे हैं Shubman Gill is now joined Indian team, and I think he's going to continue staying there. And so Hardik Pandya, you know, जैसे एक जैसे उन्होंने साई सुदर्शन के बारे में बात की, मतलब बात की. हो सकता Sai है। Sudarshan हाँ। is Sai Sudarshan has done really, really well. I mean, he is an upcoming star. I feel to watch him out this IPL. हम्म। या, Um, Again, Indian players are doing right things for GT, and then Rashid Khan doing what Rashid Khan does on the bowling राशिद side. खान। Alzari Joseph has also started contributing there, and then Shami being there. So again, GT is proving that last year was not a fluke. So far, they've had a very फ्लोक। good start. राइट राइट राइट। Coming to the next match, Punjab and Rajasthan Royals. यहाँ पे बहुत अच्छी ओपनिंग, ये मैंने थोड़ा एक्चुअली हाइलाइट्स देखा था, ओपनिंग थोड़ा देखा था मैंने, शिखर धवन, द वे ही वाज बैटिंग एंड ऑल. व्हाट अ परफॉर्मेंस फ्रॉम प्रभसिमरन एंड शिखर. ब्यूटीफुल ओपनिंग स्टैंड रहा इनका, 90 रन तक ले गए, उसमें प्रभसिमरन ने एक्चुअली 60 रन मार दिए. ही हैड अ वेरी गुड स्टार्ट. एंड then Shikhar Dhawan played all 20 overs there. He's been there. आपने यही बोला था, भानुका राजपक्षा रिटायर हो गए, उसके बाद जितेश शर्मा आए, एंड देन सैम करन डिडंट नीड टू डू मच, बट ऑलमोस्ट 197, ऑलमोस्ट 200 मारा है यहाँ पे. वेरी गुड परफॉर्मेंस देयर. यहाँ पे इन्होंने राजस्थान रॉयल्स के जेसन होल्डर को लाए थे यहाँ पे इस गेम में. um, लग रहा था कि ये कॉम्पिटेटिव गेम होगा. राजस्थान रॉयल हैज द फायर पावर इन देयर टीम, एंड for some strange reason they bring Ravichandran Ashwin in the opening. And I was like, हुआ क्या यहाँ पे? And then obviously we had, यशस्वी जायसवाल पहले आउट हो गए. अर्शदीप सिंह ने विकेट ली थी, and then Arshdeep Singh comes back again, you know, is in his next over, and he takes out Ravindra Chandra Ashwin, and within no time the pressure was back on Sanju Samson and Josh Butler. And Samson ने 42 मारा है, but everyone chipped in there. आपने अगर स्कोरबोर्ड देखोगे, शिमरन ने मारा है, रियान ने मारा है, ध्रुव जोरेल ने एंड में to blasted those 2 sixes. He was tried to make it very close. लग रहा था कि ये गेम हो गया, because they were at 122 for 5 in 15th over. So, and then you had Devdutt Padikkal, Riyan Parag, Shimran Hetmeyer, they all smashed. But Nathan Ellis and then Sam Curran, I think, had the last over, and he ensured that Punjab doesn't score 18 runs. No, sorry, Rajasthan doesn't score 18 runs, and they just scored 13, and then they lost by 5. But why would you bring Ravichandran Ashwin at the top? I never understood that.
Sanju I Samson's weirdness there. हाँ ये मैं बस ट्विटर ऐसे देख रहा था, ट्विटर फीड में हैशटैग अश्विन टैग हो रहे थे, आई डोंट नो फॉर सम स्ट्रेंज रीजन इन इन This इन स्पेन, जब मैं स्पेन में था तो मुझे समझ में नहीं आया। आई मीन वाज इट राजस्थान टीम मैनेजमेंट कॉकीनेस, या फिर वर दे ट्राइंग समथिंग, डिड दे सी समथिंग फ्रॉम अश्विन इन द नेट्स व्हिच वी आर नॉट अवेयर ऑफ, they were trying something new. I don't know. Like, why would you want to break that combination of Yashasvi Jaiswal and Josh Butler, which has been doing well since some time? तो वो मुझे समझ में नहीं आया। जैसे आपने बोला, आई थिंक सबके स्टार्ट्स रहे, दे गेव अ गुड चेज। आई थिंक एक चीज उन्होंने, राजस्थान ने अच्छी की है कि इवन दे लॉस द मैच, रन रेट which could be a factor, you never know। हालांकि मुझे लगता है कि राजस्थान रॉयल्स शुड बी इन द टॉप टू pretty easily। they should be kicking themselves if they don't। लेकिन हाँ, दे मेड श्योर दे डोंट लूज इट बाय अ बिग मार्जिन, जो कि एक बहुत बड़ा चांस था। 120 फॉर ऑड फॉर 5, 140 150 अगर ऑल आउट हो जाती तो बड़े मार्जिन से ये correct. राजस्थान रॉयल्स ये मैच हार सकती थी, विच वुड हैव बीन अ बमर फॉर देम। लेकिन हाँ, बट दे लॉस्ट बाय 4-5 रन्स, तो मुझे नहीं लगता है कि नेट रन रेट पे ज्यादा कुछ डिंग हुआ होगा उनको। Yeah, तो yeah, that's true. हाँ, तो वो एक रहेगा। मुझे नहीं लगता है कि उनको जॉस बटलर को ओपनिंग से हटाना चाहिए। दे शुड नॉट Yeah, लुक they should not have बियॉन्ड। done this because if you look at it, Jason Holder को chance ही नहीं मिला। अगर देखा जाए, शिवरन हेटमायर, ध्रुव जोरेल, Jason Holder, if I had that, they had all been one position earlier. ये game actually जीत सकते थे with the way they were hitting in the back half of the game. No, शिवरन हेटमायर ने 3 छक्के मारे and I saw one of the sixes there. I don't remember whom he hit there. मतलब गजब, मतलब ऐसा लग रहा था कि ये लोग गेम में आ गए हैं। But देख के लग रहा है सैम करन को मारे होंगे 4 ओवर में 74 रन। then, but अगेन मुझे Sam Curran made sure कि जीत ना पाए। हालांकि नेथन एलिस ने बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दी है। उन्होंने he took out those wickets out at the regular intervals, making sure कि things go very very tight for them and then wrap up very quickly, and then Sam Curran really did that last over magic for them. Yeah, Punjab did come back very very well there, 5-run win for them. So उसके बाद we had कोलकाता नाइट राइडर्स वर्सेस आरसीबी। ये थोड़ा सरप्राइजिंग मैच रहा एंड वन साइडेड भी रहा, व्हिच वाज वेरी स्ट्रेंज बिकॉज़ आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस। लग रहा था कि कोलकाता वीक टीम लग रही थी, बट देन लॉर्ड ठाकुर केम एंड लॉर्ड ठाकुर टुक ओवर। दे वर 89 फॉर 5 in 11th 12th over, and you had Rinku Singh and Shardul Thakur partnership. Rush Lord Thakur scored 68 runs of 29 balls. Changed the game. By the time Rinku Singh got out in 19th over, they were 192. 7th over mein, they scored 100 runs, changed the game for them. I don't know what went horribly wrong for Royal Challengers Bangalore. They had a great start, but then they gave it all away. हर्षल पटेल was not ineffective. जो हर्षल पटेल हम देख रहे थे पिछले 1-2 सीजन में, इन्होंने एक अच्छा परफॉर्मेंस दिया, he was not there. Kan Sharma was the only one who took, had that this thing, but they smashed Akashdeep, they smashed Raj, 204 for 7. What a score! And लग रहा था कि शायद ये interesting game होगा, and lo and behold, Royal Challengers crashed 123 all out. I think Absolutely shocker performance after, I think they were 54 for 2 or something. तो collapse ही बोल सकते हैं आप. They were 43 for no loss actually. So pretty poor performance there. And Varun Chakravarti, हमें पता था कि वरुण चक्रवर्ती का वो जो mystery bowler थे, the way he balls, he just smashed them. And then Suyash Sharma, the only youngster, हमने जब review किया था कोलकाता नाइट राइडर्स का, the one youngster who would, who's there, the mystery spinner, क्या बोल सकते हैं, this thing. He just did this well, and then Lord Thakur also picked up a wicket. But Lord Thakur took this game by the horns and मजा आ गया गेम। मैंने लॉर्ड ठाकुर का इनिंग्स थोड़ा बहुत देखा था, बट ब्यूटीफुल, अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट एक्चुअली फॉर केकेआर। बट वही केकेआर की वही टॉप ऑर्डर फेल्योर रहा, ज्यादा उन्होंने एक्चुअली परफॉर्म नहीं हाँ, किया।
Same 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 old problem. thing. It doesn't mask the problem though. They were Right. bad, They were bad. but हाँ, शार्दुल. Shardul Thakur rescued them. और वही So, एक और राजस्थान रॉयल्स की भी नहीं, राजस्थान नहीं, आरसीबी की भी एक वही प्रॉब्लम, नॉट क्लोजिंग द थिंग्स. यू हैड 89 फॉर 5 एंड ये काफी सीजन से उनकी प्रॉब्लम रही है. मैं देख रहा हूँ, इट्स नॉट ओनली टू डू विद करंट सेट ऑफ bowlers that they have. They are at the top but they are not able to close out. तो they ये एक actually were चीज. 86 for 8. They collapsed. मुझे लग रहा था कि ये तो बहुत बुरा होगा. वो डेविड विली ने थोड़े एंड में थोड़ा बचा लिया. आकाशदीप ने एक सिक्स मार के थोड़ा they crossed over that that proposed 100, but pretty dismal performance from RCB there. I think बड़ा झटका लगा. 81 runs defeat is a big defeat in IPL. Um, pretty surprising and pretty shocking. I mean, it just proves that जो हमने रिव्यू में बात किया था, इनकी बैटिंग was going to be a question mark, and अच्छा. if Virat and Faf doesn't perform, they are on trouble, and इस गेम में वही हुआ. राइट. और हमारा उसके बाद आज का जो गेम हुआ था सुबह, we had Sunrisers with his LSG, and Sunrisers continued their horror show. Aiden Markram आए हुए थे इस गेम में. He's back as a captain, but Mayank Agarwal flopped again. Aiden Markram got out first ball of Pandya, Krunal Pandya that is, and Harry Brook again had a failure. Just did not go right for them. Just did not stick to it, and yeah, they got out, crashed out 121 for 8. अमित मिश्रा ने अच्छी बॉलिंग करी है, बट कृणल पांड्या वाज अ स्टार देयर. 4 ओवर में 18 रन, 3 विकेट, and he took out the openers there. Markram, Mayank Agarwal, and Molpreet Singh. So really nailed them in that first 10 overs sort of scenario. And उसके बाद अगर आपके टॉप ऑर्डर ऐसे उड़ गए, and then you had Bishnoi come in and then take a wicket of Harry Brook. हो गया था उसके बाद कि ये this was going to be a quick defeat for them. और 16 overs में they wrapped up. ठीक है, इन्होंने थोड़ा विकेट्स लिए, but he always knew that this was going to be not going to be enough. और even though KL Rahul again आपने जो बोला 110 स्ट्राइक रेट में मारा है, स्कोर ही इतना नहीं रहा कि निकोलस पुरन एंड गुड. स्टॉइनस आके yesterday have done it. कृणल पांड्या अगेन स्कोर्ड इज 34. तो एक ऑलराउंड परफॉर्मेंस दिया कृणल पांड्या ने, and yeah, blown away SRH for their second straight defeat. ये मैच कहाँ पे हुआ था? ये मैच हैदराबाद में हुआ था. If I believe it happened in Hyderabad today. वेरी सरप्राइजिंग. मैंने इसकी हाइलाइट्स देखी आज. बॉल थोड़ा टर्न हो रहा था और स्लो था विकेट, विच इज नॉट द यूजुअल हैदराबाद पिच. मैं हैदराबाद को की चेक पिच करता यूजुअली हूँ कि ये हैदराबाद में ही हुआ था. If I remember right. Sorry, it happened in Lucknow. लखनऊ. हाँ, पिच थोड़ी सी थी डाइसी. मुझे लग रहा था कि आप देख रहे हैं कि कृणाल पांड्या बहुत जल्दी आ गए थे. कृणाल पांड्या पिक्ड अप लॉट ऑफ विकेट्स. हाँ, थोड़ा पिच था, लेकिन वही है. आई थिंक एडन मार्करम अभी आए हैं, कैप्टनसी उन्होंने दी है. एक दो मैच थोड़ा सा लग सकता है उनको टाइम टू गेट होल्ड ऑफ थिंग्स, तो थोड़ा सा टाइम देंगे. लेकिन हाँ, इट्स नॉट मुझे लग रहा है ऑस्पिशियस कि स्टार्ट फॉर. हाँ, या मुझे लग रहा है कि अब हेनरिक क्लासन आ जाएंगे. I think Harry Brook किस. may be given a chance to वाओ. rest. वाओ. वाओ. that'll be a big call. I mean, considering Harry Brook being Harry Brook. Correct. देखते हैं. देखते हैं. Because I think batting hasn't fired for them, so I have a feeling that they will ए, try to. ए, एक एक चीज है. आई थिंक हेनरिक क्लासन इज अ बेटर प्लेयर ऑफ स्पिन. मैंने उनकी बैटिंग देखी है इंडिया में. ही प्लेज स्पिन रिलेटिवली वेल. अब जैसा हैरी ब्रुक खेले, आई थिंक मुझे लगता है एक और मैच देंगे हैरी ब्रुक को, फिर उसके बाद शायद डिसाइड करेंगे क्या करना है. सो हम्म, लेट्स सी. हो लेट्स सी सकता क्या है, होता है. हो सकता है. हम्म, हम्म. बट हाँ, सो बैक अगर अब ये आज तक हुआ था, और इसके बाद अब स्कोर बोर्ड अगर स्टैंडिंग देखा जाए, लखनऊ इज सिटिंग एट द टॉप. 3 games उन्होंने खेले एक्चुअली. सो टेक्निकली इट इज नॉट राउंड 2 फॉर देम, इट इज राउंड 3. 3 खेल लिया उन्होंने. But Gujarat Titans and Punjab have won both their games, which was a surprise for me. Punjab especially has surprised me a lot. Um, no surprises who's at the bottom. Sunrisers is at the bottom right now.
and Delhi also hasn't opened their account yet. And so मुंबई ने एक ही खेला है, तो अभी देखते हैं कि मुंबई का कैसा रहेगा. But बहुत ही खराब रन रेट है सनराइजर्स का, -2.8. And Delhi isn't also doing that well there, -1.7. Yeah, so essentially ये है आज का हमारा IPL राउंड 1, सॉरी वीक 1 प्रीव्यू. सैटरडे को भी 2 मैचेस हो रहे हैं. Trying to remember who are the 2 matches there. We have tomorrow Rajasthan Royals is playing Delhi Capitals first, and उसके बाद रात का गेम है मुंबई इंडियंस वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स. वानखेड़े में हो रहा है. पहला गेम गुवाहाटी में हो रहा है. So heavyweight champions Mumbai, champions Chennai are multiple winners are gonna be there. And then Sunday ko Gujarat Titans are playing Kolkata Knight Riders. That's at Ahmedabad. And then Hyderabad में Sunrisers Hyderabad versus Punjab Kings, who are already in a rolling form. So pressure is on Hyderabad to win. Pressure is on Mumbai to win tomorrow. But I think Gujarat and Kolkata, I think they would try to continue their momentum there. Kolkata जीत गया, Mumbai जीत गया, Gujarat जीत गया. So yeah, that's going to be the weekend games for us in the IPL. So आज का थोड़ा हमारा वीडियो लंबा रहा है क्योंकि हमने 10 मैचेस कवर किए इन टर्म्स ऑफ रिव्यू पूरा एक हफ्ते का. होपफुली हम मिड वीक का अगले हफ्ते से वीडियो कर पाएंगे. Travel or work commitments, we should be able to manage it next week. But thank you, for listening and all, for watching the video. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, please hit that like button. Please subscribe. Please also share it with your friends and family. Please give us some love. We are still doing, learning this. I mean, इतना आता नहीं है, सीख रहे हैं. But yeah, IPL reviews will continue as we go along. काफी matches are to play, so very early. I don't know, अभी all 40 plus games are there almost. So very early to see Sunrisers at the bottom there. I hope Sunrisers will pick it up and do well and keep up our predictions. But very, very impressed with Punjab. Very, very impressed with the way Kolkata has, even despite all the issues they have, and Lucknow and Gujarat Titans doing what they did last year. Amazing performance from them. So let's look at this weekend ke games, and we will continue again after the weekend with a post-weekend matches reaction. Thank you, and we will talk again later. Bye-bye. Bye-bye.